अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ES अकेडमी। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 6 वेब डेवलपमेंट के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे। इसमें जो भी डिटेल से क्वेश्चंस होंगे, डेफिनेशंस होंगी, हर चीज़ को डिटेल से देखेंगे। उसके बाद हम बुक की एक्सरसाइज वगैरह भी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और इंशाल्लाह थर्ड लेक्चर में हम MCQs को देखते हैं तो वो भी सॉल्व करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, व्हाट इज़ द वेब डेवलपमेंट। वेब डेवलपमेंट क्या होती है? डेवलपमेंट ऑफ वेबसाइट्स एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन इज़ कॉल्ड वेब डेवलपमेंट। वेब डेवलपमेंट क्या होती है कि वेबसाइट्स या ऑनलाइन एप्लीकेशंस की जो डेवलपमेंट में प्रोसेस यूज़ हो रहा होता है उसको क्या कह रहे हैं हम? वेब डेवलपमेंट कह रहे हैं। दिस इज़ डन बाय कोडिंग इन डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड यूजिंग सेवरल वेब डेवलपमेंट टूल्स एंड फ्रेमवर्क्स। ठीक है, तो हर चीज़ को बनाने के लिए कुछ चीज़ें रिक्वायर होती हैं। इसी तरह से वेब डेवलपमेंट के लिए हमारे पास टूल्स होना ज़रूरी हैं जो कि इस काम में ज़रूरी होते हैं। फ्रेमवर्क होना ज़रूरी है, डिफरेंट लैंग्वेजेस जो है वो हम उसको कोडिंग के लिए यूज़ करते हैं। अ कंप्लीट वेब एप्लीकेशन में कंसिस्ट ऑफ यूज़र इंटरफेस, जो कि हमारे पास एक फाइनल स्क्रीन की शक्ल आती है जहाँ पे बटन्स होते हैं, जहाँ पे लिंक्स होते हैं, तो उसको हम कह रहे हैं यूज़र इंटरफेस। बैक एंड सर्वर, जो कि हमारे पास एडमिन जो है वो यूज़ करता है, जिसकी वेबसाइट होती है या जिसने वेब पेज बनाया होता है या फिर जो उसको ओन कर रहा होता है। ठीक है, और आता है हमारे पास डेटाबेस। तो देखते हैं नीचे सारी चीज़ों को डिटेल से डिस्कस करेंगे, परेशान नहीं होना आपने। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। अब हम इसमें छोटी छोटी जो डेफिनेशंस हैं उसको कवर करेंगे। www आपने देखा होगा अपने अक्सर वेबसाइट लिंक्स के अंदर, तो उसकी फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब। तो इसको देखते हैं। पहली डेफिनेशन हमारे पास है वर्ल्ड वाइड वेब। द वर्ल्ड वाइड वेब इज़ कॉमनली नोन एज वेब। The web is a collection of computers connected through a network to provide publicly accessible information. ठीक है, अब वेबसाइट क्या होती है कि बहुत सारे कंप्यूटर्स को एक जगह कनेक्ट कर देती है और प्रोवाइड क्या करती है, जो भी उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। वेब पेज क्या होता है? वेब पेज इज़ अ डॉक्यूमेंट कॉमनली रिटन इन द HTML। ठीक है, HTML जो है हमारे पास एक लैंग्वेज हो रही होती है जिसके अंदर ये वेब पेजेस बनाए गए होते हैं, और ये एक तरह का डॉक्यूमेंट होता है। ठीक है, दैट इज़ एक्सेसिबल थ्रू इंटरनेट बाय यूजिंग इंटरनेट ब्राउज़र। ठीक है, और इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं? इंटरनेट ब्राउज़र के थ्रू। वेबसाइट क्या होती है? वेबसाइट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। ठीक है, बहुत सारे वेब पेजेस को अगर आप ज्वाइन कर दें, कंबाइन कर दें, तो वो क्या होता है? वेबसाइट होती है। उसके ऊपर क्या होता है? कंटेनिंग टेक्स्ट लिखा हुआ होता है, इमेजेस होती हैं, और टाइप ऑफ मल्टीमीडिया लाइक वीडियोज़ वगैरह और ग्राफिक्स आ गई हमारे पास सारी चीज़ें, और स्पेसिफिक सेट ऑफ इंफॉर्मेशन भी उसी पे ही मौजूद होता है। अ वेबसाइट कैन बी थ्रू अ यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, ये उसकी फुल फॉर्म आ गई URL की, जो कि URL कोड आपने अक्सर देखे भी होंगे। तो उसकी फुल फॉर्म क्या होती है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ब्राउज़र क्या होता है? वेब ब्राउज़र इज सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन फॉर एक्सेसिंग वेबसाइट ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। Example, the most common web browser include Microsoft Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Fox और Safari। तो ये सारे हमारे पास आ गए वेब ब्राउज़र। URL क्या आ गया हमारे पास? URL क्या करता है? इट इज़ द एड्रेस ऑफ रिसोर्स ऑन द इंटरनेट। उसके अलावा एग्जाम्पल हमारे पास ये आ गई, जिस तरह की ये आपके पास वेबसाइट के लिंक्स आ रहे होते हैं, बेसिकली उसकी फॉर्म आ गई। ठीक है, और ये किस किस चीज़ पे बेस्ड कर रहा होता है? द प्रोटोकॉल यूज टू एक्सेस द रिसोर्स और द लोकेशन दैट द सर्वर होल्ड। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह से आ गई, और ये हमारे पास रिसोर्स बता रहा होता है कि कहाँ से ये चीज़ बिलोंग कर रही है। सर्च इंजन क्या होता है? सर्च इंजन इज़ द वेब बेस्ड टूल दैट इनेबल्स द यूज़र लोकेट इन्फॉर्मेशन ऑन द वेबसाइट। ठीक है, यहाँ से हम अपनी चीज़ें जो है वो सर्च कर सकते हैं, जो भी हमें रिक्वायर है। और एग्जांपल क्या आ गई? मोस्ट पॉपुलर सर्च इंजन आर गूगल, याहू या बिंग। ठीक है, मोस्टली तो खैर गूगल ही यूज़ हो रहा होता है। उसके अलावा होम पेज पे आ जाते हैं। तो होम पेज क्या है? होम पेज ऑल्सो नोन एज लैंडिंग पेज इज़ अ वेब पेज दैट सर्व एज अ स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द वेब। वेब होस्टिंग क्या होता है? वेब होस्टिंग इज़ अ सर्विस दैट अलाउ ऑल द वेब डेवलपर टू मेक अ वेबसाइट पब्लिकली एक्सेसिबल थ्रू द इंटरनेट। वेब सर्वर क्या होता है? वेब सर्वर इज़ अ कंप्यूटर दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्विंग अ वेबसाइट and all of its content including text and media to the user. Next हमारे पास आगे describe the different types of websites। तो वेबसाइट्स को डिस्कस करते हैं। There are the different types of websites specialized such as protocols, news, informational, educational, personal, business and blogs, forums, internet and social। ये इस तरह की हर तरह की आपको वेबसाइट जो है वो
अवेलेबल है आज के दौर में, ठीक है। ये पोर्टल्स आ गए, उसके अलावा जो मोस्टली आपकी यूनिवर्सिटी या स्कूल वगैरह के आ गए हमारे पास मेनली। उसके अलावा हमारे पास न्यूज़ के आ जाते हैं, फिर हमारे पास इंफॉर्मेशनल वेबसाइट्स आ जाती हैं। एजुकेशनल के लिहाज से बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, पर्सनल हैं, उसके अलावा बिजनेस ब्लॉग्स हैं, फॉर्म्स हैं और इंटरनेट सोशल मीडिया वेबसाइट हमारे पास मौजूद होती हैं। पोर्टल में हमारे पास ये डेफिनेशन आ गई है पोर्टल वेबसाइट्स की, अ वेबसाइट दैट प्रोवाइड अ सिंगल एक्सेस पॉइंट टू द इंफॉर्मेशन फॉर ऑल इट्स यूजर्स, ठीक है। उसके अलावा इट कलेक्ट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज लाइक ईमेल्स, फॉर्म्स, सर्च इंजन्स एंड प्रेजेंट इन टू द यूज़र इन अ यूनिफॉर्म वे। एग्जाम्पल हमारे पास अगेन याहू MSN की आ गई। न्यूज़ में हमारे पास क्या होता है, न्यूज़ इज द मॉडर्न डे अल्टरनेटिव फॉर द न्यूज़ पेपर्स। उसके अलावा सर्च वेबसाइट्स कंटेन एवरी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द करंट अफेयर्स, स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स, वेदर, हेल्थ, टेक्नोलॉजी एंड द एंटरटेनमेंट। इंफॉर्मेशन में हमारे पास आ गई प्रोवाइड द डिटेल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी फील्ड। There are many dedicated informational websites for the science, arts, sports, online training, researches, etc. Educational में हमारे पास आ गई educational websites are purely designed to deliver like educational material for both teachers and students. ये हमारे पास इसकी एग्जांपल्स आ गई। उसके अलावा पर्सनल में हमारे पास आ गई है पर्सनल कैन शेयर अबाउट हिज और हर बायोग्राफी अचीवमेंट इन अ कस्टम डेवलपमेंट। उसके अलावा बिजनेस में हमारे पास आ गई बिजनेस वेबसाइट इज़ द बेस्ट वे फॉर द एनी ऑर्गेनाइजेशन टू मार्केट देयर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। इट ऑल्सो टेल अबाउट द टीम पॉलिसीज प्रोसीजर्स फॉर दैट बिजनेस। उसके अलावा हमारे पास ये इसकी एग्जांपल्स आ गई। ब्लॉग्स में हमारे पास है ब्लॉग इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ वेबसाइट दैट इज़ कंपोज्ड ऑफ आर्टिकल्स एंड पोस्ट। दीज आर्टिकल्स आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू अ कैटेगरीज एंड सॉर्टेड बाय द टाइम व्हेन दे आर पब्लिश। एग्जांपल्स आ गए हमारे पास वर्डप्रेस इज़ अ पॉपुलर ब्लॉग वेबसाइट। Forums आ गए हमारे पास is an online place where the different users can discuss about any topic. These topics can be categorized so that user can easily locate topics for their interest. Entertainment आ गई any entertainment websites of content like videos, games purely for the purpose of entertainment. Example हमारे पास आ गई YouTube is widely used for the entertainment purpose. Social हमारे पास आ गई social website is a platform where the different people get together and socialize each other. They can also share their ideas, opinions and media. Example Facebook, Twitter, instead of social networking website. Define and explain the HTML hypertext markup language. HTML stands for hypertext markup language. It is a standard markup language for the text document. HTML is used to create web pages that are displayed by the web browser mainly on the internet. HTML consists of series of elements. These elements tell the browser how to display the content. It allows the user to create structured content by adding headings, paragraphs, links, block quotes and other media. It takes the advantage of simple code structure called tags, an attribute to achieve formatting, graphic and navigation effect on the website. What are the various steps involved in creating a web requirement? Again, creating a simple web page. HTML is very easy. It requires a text editor, a file with .html extension and a web browser to view that. These are the steps. Text editor, Notepad. Start by simply creating new blank file in a text editor of your choice. A simple text editor like Notepad can be used to start a coding for HTML web page. HTML code in text editor. HTML element is the root element of the HTML page. Head element contains the meta information about the HTML page. Title element specify a title for the HTML page which is shown in the browser title bar on or in the page tab. Body element defines the document body and it is a container for all the visible content such as headings, paragraphs, image, hyperlinks, tables and lists. Save the HTML page. Go to the file menu and click on the save. Make sure to provide .html or .html extension for the file being saved. This will save the document as a web page instead of plain text file. View the HTML page in a browser. Open the saved HTML in your default web browser. Web browser will automatically translate the HTML code to the correctly displayed web page. Define and explain the HTML tags. HTML elements are building blocks of HTML page. These elements are defined by placing HTML tags in your document. These tags are
placed inside angular bracket. Here is called opening start tag and here it is called closing end tag. Most of HTML tags always require a closing tag, while some HTML tags such as are empty tags, which means that they don't require a closing tag. Tags also further customized by adding attributes to them. HTML tag structure. These are the following structure: simple tag, tag name, content, tag, backslash tag name, tag attribute. Here the example. Explanation. The above syntax shows the structure of opening tag, defining attribute values, placing the content inside the element, represent the tag, and its closing structure. HTML tags for designing and formatting of the content. Some of the HTML tags introduce content directly into the web page, and while the other enhance the design and format of that content. Some most commonly use HTML tags which change the looks of the web page. It specifies the HTML version and use so the web browser can show the web page according to the HTML standard. All the HTML document must start with this tag, HTML tag. All the HTML documents start with the HTML tag and end with the backslash HTML tag. Head. It is used to define the additional information about the web page. It contains a set of tags such as title, meta, style, script, etc. Body. The main content of the web page is contained between the body and backslash body. Titles and footers. Title. It defines the title of a web page. Titles are very important as they appear on the top of the browser window and displays on the search engine results page. Footer. It defines the footer for a web page. Example: copyright 2020, all the rights reserved. Paragraphs and line break. It defines the paragraph of a text in a web page. It always starts from a new line and adds space before and after in the text. BR. It defines the line break and start the following content from a new line. Unlike P tag, it does not add space before or after the break. HR. It draws a horizontal line where it is defined. It is used to differentiate between the section of the pages. Headings. H1 to H6. It is used to define a 6 level of HTML headings: H1, H2, H3, H4 and H5, and the last H6, with H1 being heaviest heading and the H6 lightest heading. Text formatting. Tag B, tag I, tag U. These tags are used to bold, italicize and underline the text respectively. Tag pre. It is used to define a pre-formatted tag. The web browser displays such text in which space and line breaks defined in the HTML code. Font. It is used to define the font, size, color of the text. These tags can be composed with 3 attributes: size, color, space. This tag is supported till version 4.1 of HTML. Center. It is used to align the text to the horizontal center of the web page. This tag is supported till version 4.1 of the HTML. Sub. It defines subscript text which is under the baseline of the other tags and has a smaller size. Example: H2O. It defines the subscript text which is highly slightly above the normal line of the other tags and has a smaller size, like this. Here are some examples which you can use. Here are the output. Define the HTML list. How many types of lists can be created in HTML? HTML lists allow the web developer to group a set of related items in the list. Lists are very useful in displaying point-by-point information such as to-do list, list of ingredients for a recipe, list of categories, etc. Types of lists in HTML. There are the 3 main elements: unordered list, ordered list, and description list. There is another list named nested list, list inside list. The web browser automatically adds indent, space, markers to the HTML list. Ordered list is a list of related items in which the order of the item is relevant. Order of its item is irrelevant. It is defined by UL tags and each of its list item is defined by LI tag. The web browser will display these list items as a bullet point. Here we are. Here's the example and here's the output. Ordered list. An ordered list also display a list of related items. It is used where the order of the list is important. Student in the order of their exam ranks is the example. It is defined by OL tag and each of its
list item is defined by li. The web browser will display these list items with a number starting from 1 instead of bullet point. Ordered list can be also defined with the two of its attributes, start and reserve. Start attribute defines the starting number of first list item. Reserved attribute is used to display the list in descending order. The list items for ordered list can also be defined with the value attribute, which is used to place that item at the specific position or a number in the list. Here is the example and here is the output for you. Description list. Description lists are used to display the different items and their description, just like a dictionary or a glossary. It is defined by DL tag, and each of its list item is composed of two elements, term and description. Term and description. The term is defined by DT tag and its description is defined by DD tag. In description list, a term can have one more description and description can have one more term. Here's the example and here's the output. Nested list. HTML list can be nested. Example, list inside list, such as lists are called nested list. A very powerful feature of HTML list is their ability to nest one into other. Any of the list type can contain any other list type as its list item. It is defined by placing the new list tag inside the li tag of previous list. Web browser automatically indent nested list and assign appropriate marker to those nested list item as well. Example, here's the output. How are the images displayed in HTML tags? Image gives a visual appeal to the website. Sometimes interesting text, interesting image in a HTML page. Images can be inserted in a HTML document by using image tag. This does not create a copy of image. Instead, it is only create a reference to the original image placed somewhere in the computer storage. The image tag is an empty tag, which means that it does not require a closing \image tag. It contains 5 attributes, out of which 2 are required and 3 are optional. Here are the attributes of image tag. src URL defines the source or image or a reference of the image. Here are the syntax. Alt text defines the alternate text of the image. Here the syntax for it. Pixels define the display width of the image. Here is the syntax. Height pixels define the display height of the image. Here is the syntax. Border pixels define the width of the border to the display around the image. This attribute is supported until 4.1 version of HTML. This is the syntax. This is the example and here is the output. Can be the background color change in the HTML. Background color also give a visual appeal to the website. Web browser display an HTML document with a white background by default. However, this can easily be changed to the different color or even an image with the help of BG color and a background attribute of the body tag. Background attribute BG color. This attribute is used to change the color of the entire web page. Color value can be defined as RGB code, hexadecimal code, or by color name. For instance, to set the background color of the web page to the green, we can use any one of these value. Background. This attribute is also used to display an image as the background of the web page. Its value will be reference or URL of the background image. Define hyperlink. Hyperlink allow a user to navigate from one web page to the other. It also enables user to navigate to different sections within the same web page. Hyperlink convert text or other media into a clickable object. A hyperlink in the HTML is defined by a tag A and its href attribute. The value of href is the reference of the other web page different section within the same page. Link to the external document. To send a user or to any other web page, use a user of that page as the value of href attribute. Links within the same document. Use ID of any HTML tag to use a name of the section of page where a user should reach after clicking on the link. Create a hyperlink and set the above name as a href attribute of this link, starting with the hash symbol. Here are the attributes and the hyperlink. Href URL. Specify the URL or a section of the ID name, section name. Specify the name of an anchor.
target, blank, parent, cell, top, frame name, specify where to open the link document. Define table displaying the content like text, image, links in a form of row and a column. The coordinating place of a row within a column is called cell. These cells contain some content of the web page. An HTML table is defined by table tag. Rows and columns. A row is a collection of horizontal cells of the table. A table can contain any number of rows. The row in the table have an equal number of cells. It is defined by tr tag, which is placed inside the table tag. Column. A column is a collection of all vertical cells of the table. Table can contain any number of the column as well. It is defined by td tag, which is displayed inside the tr row tag. Formatting feature of table. HTML table allows defining a header for the column of our table. The header cell is defined by a th tag and is placed inside a tr row tag. It is used to differentiate from the content placed inside the normal td data cell. To make the entire header row stand out for the rest of the table content, define the th tag for all the columns of the first tr row tag of any table. The content is placed inside the cell in the table by using td table data tag. A cell contains any type of data such as text, image, and media link. Here are the attribute, value, and description. Align, left, center, right. Specify the alignment of the table according to the surrounding width, pixel, percentage. Specify the width of the table. Border 1 or 0. Enable or disable the border around the table. Cell padding, pixel. Specify the space between the edge of the cell and the content inside. Cell spacing, pixels. Specify the space between cells. Cell attributes. Align left, center, right. Specify the alignment of the content inside the cell. V-align top, middle, bottom, baseline. Vertical align of the content in a cell. Call span number. Specify the number of the column a cell should merge into. Row span number. Set the number of the row a cell should merge into. Here's the example for you. Here's the output for you. Define the frame set. Frames. HTML frames are powerful elements which allow displaying the content of other HTML document within a web page. A web page can divide into multiple sections such as section. Each section can display all the content from the different web page by using frames. It is defined by a frame tag. The src attribute is used to provide the reference of the URL of another web page to display in this frame. Here are the attributes, value, and description. SCR URL defines the URL of the page. Here defines top and bottom space frame. Defines the left-right spacing. Define if the user can change the frame size or not. Defines if the scroll bar should be displayed within the frame or not. Frame sets. Frame set defines how a web page is divided into a row and a column to display a multiple on that web page. It is defined by frame set tags and contain one or more frame tags. Here are the attribute, value, and description. Calls, pixel, define the number and the size of the frame. Define the number and the size of the frame draw. Web designing tool. Here the list for you. Microsoft Front Page, CorelDRAW, Adobe Dreamweaver, WordPress, Microsoft Visual Studio, Figma, Coffee Cup, HTML Editor, Adobe XD. I really hope so कि आप लोगों को आज की वीडियो, आज का लेक्चर हेल्पफुल रहा होगा. Till then, अल्लाह हाफिज.